ભરૂચમાં મોડી રાત્રે ભારે પવન સાથે વરસાદ વરસતા લીંબડી ચોક વિસ્તારમાં આવેલી યાઝ શાહ હુસૈન શાહ બાવાની દરગાહમાં આવેલું વર્ષો જૂનું લીમડાનું વૃક્ષ ધરાશયી. સદનસીબે કોઈ જાનહાનિ નહીં. આગામી 7 દિવસ સુધી રાજ્યમાં વરસાદની આગાહી. અરબ સાગરમાં સર્જાયેલી લો પ્રેશર સિસ્ટમ આજે ડિપ્રેશનમાં ફેરવાય તેવી સંભાવના છે. હવામાન વિભાગે આગામી 7 દિવસ માટે ગુજરાતના વિવિધ વિસ્તારોમાં છૂટાછવાયા સ્થળોએ ગાજવીજ સાથે ભારે વરસાદની આગાહી કરી છે. ગતરોજ મોડી રાત્રે ભરૂચ જિલ્લામાં તોફાની પવન સાથે વરસાદ નોંધાયો હતો. ભારે પવનના કારણે ભરૂચ શહેરના લીંબડી ચોક વિસ્તારમાં આવેલી યાઝ શાહ હુસૈન શાહ બાવાની દરગાહમાં આવેલું વર્ષો જૂનું લીમડાનું વૃક્ષ ધરાશયી થયું હતું. રાત્રિના સમયે ઘટના બની હોવાથી કોઈ જાનહાનિ થઈ ન હતી. આ બાબતે સ્થાનિક લોકોએ રાહતનો શ્વાસ લીધો હતો. झाड़ तो देख अखा नाम गया करीम गया करीम जा करीम बाहर निकल करीम बाहर निकल कादर बाहर निकलो दरगाह का झाड़ गिर गया है बाहर निकलो बाहर देखे कुछ नहीं हुआ ढाबा टूटा है खाली ढाबा देखिए करीम अच्छा ना गाड़ी हटा लेते नहीं आई सुटेला मैं बोल ये लाइन चालू है हो ये वायर चालू है बाबा का झाड़ गिर गया भाई आभूषण बाबा का करीम दूर है वायर से दूर है भाई यहाँ सुतेला मैं अभी तो अक्का झाड़ पड़ गया खाली ये धीरे से पड़ा पर कोई को नुकसान नहीं हुआ है भाई चालू है लाइन देख के आइयो भाई यहाँ सुतेला भाई खाली में अँ जूते लो बड़ा मैं बोल अँ जूंगे लो मैं लेला नहीं कीधु मुझको चल बाबा भी अँ पे लो ये लोग मेरा दिल में ना के पता ना हाँ 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 बराबर है अब काटना पड़ेगा वे इम्तियाज यहाँ से उठा नहीं यहाँ आया बोल अजू तो मैं लाइट भी गई वो बस यहाँ सुतेला में ये उठा के खाली वीडियो उतारा ना पड़ा जा वे लाइन चालू है देखियो बोल वे इधर धीरे से एकदम पड़ा खा वीडियो है मेरे अंदर धीरे से पड़ा खबर जहाँ कोई ना हाथ से खुलाया बोल तो यहाँ सुतेला में तो देखने पर इन्हों केव अल्लाह है बोल केवा बचाएवा सब टूट गया सब जरा अंदर इधर में आ जाओ ये भी अंदर है ढाबा पाली माली सब गिर गए हमें लेलाने की घर का पाए
અરે યાર મેં સુતેલા ઉઠાયા હજુ તો બે માં ઉધાર જ ગયા ખોળે મેં બેઠેલા